आप भी डायबिटीज और मोटापेपन के लिए काम करेंगे क्या? Well, we very much look forward to partnering with organizations and the government and non-governmental organizations here in India around broader public health issues, including the issue of obesity. I'm very proud of the work that Michelle has done on this issue. We're seeing a worldwide epidemic of obesity, in many cases starting at a very young age. Part of it has to do with the increase in processed foods, not naturally prepared. Part of it is the lack of activity for too many children. And once they're on this path, it can lead to a lifetime of health challenges. And so this is an issue that we'd like to work on internationally, including here in India. And it is part of a broader set of issues around global health that we need to address. The Prime Minister and I have discussed, for example, how we can do a better job in dealing with issues like pandemic and making sure that we have good alert systems so that if a disease like Ebola or a deadly flu virus or polio appears, that it's detected quickly and then treated quickly so that it doesn't spread. And the public health infrastructure around the world needs to be improved. I think the Prime Minister is doing a great job in focusing on these issues here in India. And India has a lot to teach many other countries who may not be advancing as rapidly in improving this public health sector. But it has an impact on everything, because if children are sick, they can't concentrate in school and they fall behind. It has a huge economic impact on the countries involved. And so we think that there's a lot of progress to be made here, and I'm very excited about the possibilities of continuing this work even after I leave office. मुझे एक सवाल श्रीमान अर्जुन ने पूछा है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। उन्होंने पूछा है कि मैंने व्हाइट हाउस के बाहर एक पर्यटक के रूप में आपकी एक पुरानी फोटो देखी है, जब आप बीते दिनों सितंबर में वहां गए तो कौन सी बात आपके दिल को छू गई? ये बात सही है कि मैं जब पहली बार अमेरिका गया था तो व्हाइट हाउस जाना तो हमारे नसीब में नहीं था। तो व्हाइट हाउस से दूर एक लोहे की बहुत बड़ी जाली लगी हुई है, तो अब जाली के बाहर खड़े रह करके फोटो निकाली थी, पीछे व्हाइट हाउस दिखता है। और अब प्रधानमंत्री बन गए तो वो फोटो भी पॉपुलर हो गई। लेकिन तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी कभी जिंदगी में व्हाइट हाउस पे जाने का अवसर आएगा। लेकिन जब मैं व्हाइट हाउस गया, एक बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैं ये कभी भूल नहीं सकता हूं। बराक ने मुझे किताब दी। वे किताब काफी मेहनत करके खोज करके लाए थे और 1894 में वो किताब प्रसिद्ध हुई थी। स्वामी विवेकानंद, जो मेरे जीवन की प्रेरणा है, वे शिकागो गए थे, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में गए थे और वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में जो भाषण हुए थे उसका वो कंपाइलेशन था। वो किताब खोज करके मेरे लिए लाए थे। यानी वो घटना मेरे लिए दिल को छूने वाली थी। लेकिन उतना ही नहीं, उन्होंने वो किताब के पन्ने खोल खोल करके क्या क्या उसमें लिखा है वो मुझे दिखाया। मतलब कि वो पूरी किताब देख चुके और इस गर्व के साथ मुझे कहा कि मैं उस शिकागो से आता हूं जहां स्वामी विवेकानंद आए थे। ये बातें मेरे मन को बहुत छू गई थी और मैं जीवन भर ये मैं अपनी विरासत मानता हूं। तो कभी व्हाइट हाउस के से दूर कहीं खड़े रह करके फोटो निकालना और फिर कभी व्हाइट हाउस में जाकर के जिनके प्रति मेरी श्रद्धा रही है उनके जीवन की किताब प्राप्त करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल को कितना स्पर्श कर गया होगा। बराक, आपके लिए क्वेश्चन है। हिमानी फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। Question is for you. Well, the question is
did you both imagine you would reach the positions that you've reached today? And it's interesting, Mr. Prime Minister, you talking about the first time you visited the White House and being outside that iron fence. The same is true for me. When I first went to the White House, I stood outside that same fence and looked in, and I certainly did not imagine that I would ever be visiting there, much less living there. I think both of us have been blessed with extraordinary opportunity, coming from relatively humble beginnings. And when I think about what's best in America and what's best in India, the notion that a tea seller or somebody who was born to a single mother like me could end up leading our countries is an extraordinary example of the opportunities that exist within our countries. Now, I think part of what motivates both you and I is the belief that there are millions of children out there who have the same potential, but may not have the same education, may not be getting exposed to opportunities in the same way. And so part of our job, part of government's job, is that young people who have talent and who have drive and are willing to work for it are able to succeed. And that's why emphasizing school, higher education, making sure that children are healthy, and making sure those opportunities are available to children of all backgrounds, girls and boys, people of all religious faiths and all races in the United States, is so important. Because you never know who might be the next Prime Minister of India or who might be the next President of the United States. They might not always look the part right off the bat, and they might just surprise you if you give them a chance. Thank you, Bharat. ये सवाल हिमानी लुधियाना पंजाब से मुझे भी पूछा है कि क्या आपने कभी इस पद पर पहुंचेंगे इसकी कल्पना की थी? जी नहीं, कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि मैं तो जैसे बराक ने बताया बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूं, लेकिन मैं बहुत लंबे अरसे से सबको ये कहता आया हूं कि कुछ भी बनने के सपने कभी मत देखो। अगर सपने देखने हैं तो कुछ करने के देखो। जब कुछ करते हैं तो संतोष भी मिलता है और नया करने की प्रेरणा भी मिलती है। सिर्फ बनने के सपने देखते हैं और नहीं बन पाते हैं तो सिवाय निराशा कुछ हाथ नहीं लगता है। और इसलिए मैंने जीवन में कभी कुछ भी बनने का सपना देखा नहीं था। आज भी कुछ बनने के सपने दिमाग में है ही नहीं, लेकिन कुछ करने के जरूर हैं। और भारत माता की सेवा करना, 125 करोड़ देशवासियों की सेवा करना, इससे बड़ा सपना क्या हो सकता है? वो ही करना है। मैं हिमानी का बहुत आभारी हूं। एक क्वेश्चन है बराक के लिए फ्रॉम ओम प्रकाश। ओम प्रकाश इज स्टडिंग संस्कृत एट JNU. He belongs to Chunjunu, Rajasthan. Om Prakash is a convener of Special Center for Sanskrit Studies in JNU. Well, this is a very interesting question. His question is, the youth of the new generation is a global citizen.